We start with the new topic again, that is the Biot-Savart's law. The Biot-Savart's law, actually what happens, this is a law which gives us an expression to find the magnetic field near a current carrying wire. Okay, I repeat it. Biot-Savart's law gives us an expression to find the magnetic field near a current carrying wire. Because from the lower classes you know a phenomena that whenever a current is flowing through a wire, then a magnetic field is developed around the wire. Okay, you have studied also in lower classes like class 10. Okay, that if the wire is carrying say current I, then you find that then you know that there exists a magnetic field around the wire, and it is shown by the concentric circles like this, and having the direction as a thumb rule. You can see, you take a thumb, just point the direction of the thumb, and this curling finger will give you the direction of the magnetic fields. Or for example, say if you are having a wire like this, say wire just wire cross section of the wire, and cross section of current अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस करेंगे, तो देखो करंट जहाँ जा रहा है वहाँ थंब को डालेंगे, और बाकी जो है ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, it will show the direction of the magnetic field. The curling fingers show the direction of the magnetic fields like this. Okay, these are the curling fingers that is showing the direction of the magnetic fields. So this is the very important concept here, that a wire is carrying current, and the magnetic field is shown by the curling fingers. In the same way, what I would like to say is that our main intention here is to find the magnetic field at a point due to a differential current element. Due to a differential current element. Now, what is differential current element? Differential current element, you know. So what happens here? Biot-Savart's law. You can say here that Biot-Savart's law states an expression to find a differential magnetic field, okay, dB, at a point near to a differential current element, that is I, due to the differential current element IDL. So differential current element is a part of a wire. Differential current element is a part of a wire, and it is a vector quantity. Differential current element is a part of wire and is a vector quantity. ठीक है, इसलिए देखो ऊपर में देखो हमने ऐसे करके एरो से दिखाया है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अभी देखो अपने को क्या निकालना है. Biot-Savart's law states expression to find the differential magnetic field at a point near to a differential current element. Now here you see that how we start with our expressions to find this differential magnetic field. Now for example, if you take for example a wire carrying a current I, then I can mark the differential current element, a small part of the current element. This is a current element. This is a wire carrying current. A small part of the current element is known as the differential current element, and that is marked as, say, this is marked as a vector. This one, and I put it as IDL. Okay. Now due to this differential current element, we are having one point से P, और यहाँ पर क्या निकालना अपने को dB निकालना, मतलब अपने को डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना. तो क्या करेंगे, इसके सेंटर से एकदम सीधा जो है ये लाइन में से जोड़ने से हमको ये दिखता है कि यहाँ से जो दूरी है, इधर से और इधर से इसकी जो दूरी है वो आपको कितनी है, मान लो r है. R is the distance. Now if r is the distance, then what happens, along this line there is a small unit vector, that is your r cap.
and r is the distance. Now according to Biot-Savart's law, so according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart law, that the differential magnetic field at point P, that is dB, can be expressed as mu naught upon 4 pi I dl. ये जो है डिफरेंशियल क्रॉस करना है ना, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करना किसके साथ, आर कैप के साथ. अपन नीचे क्या करेंगे, इसको आर मॉड से अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. तो इसको अगर दिस इज द मेन एक्सप्रेशन फॉर द बायोट-सावर्ट लॉ. ठीक है, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है बायोट-सावर्ट लॉ. इसको अगर थोड़ा सा अपन देखें कि यहाँ पर जो है ये आपका ये वाला जो वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर ये एंगल अगर थीटा होता है, दिस एंगल इज योर थीटा, इफ द एंगल इज थीटा, देन यू कैन एक्सपेंड दिस वन एज योर dB का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl का मॉड, आर कैप का मॉड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा अपॉन आर मॉड का स्क्वायर. आर कैप का मॉड कितना होता है, 1 होता है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मतलब dB कितना हो जाएगा, dB विल बी हाउ मच, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ओके आई dl साइन थीटा अपॉन योर हाउ मच इट इज आर स्क्वायर. Okay, now this comes to be like this. So this is known as the Biot-Savart's law. One of the other expression you can say this r cap is equal to r का वेक्टर अपॉन r का मॉड से अपन दिखा सकते हैं. And in this case you can express this dB as mu naught upon 4 pi I dl vector cross r cap, put it like this, r upon r mod का square into r mod. So you can put it here, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r mod ka cube. So this is also one of the expression of this Biot-Savart's law. Remember here that here what happens, I'd like to say you just कि mu naught upon 4 pi को अपन क्या बोलते हैं, constant है, and this constant value is equal to your 10 to the power minus 7. ओके, एंड दिस म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग परमेबिलिटी, है ना, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, PRMEABI, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, VACCUM वैक्यूम. So this is all about the